हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हम कमेंट्री बॉक्स में जनाब कमर बेग साहब को खुशामदीद कहते हैं। आज कुछ वजूहात की वजह से ज़रा लेट हो गए थे, तो मैं माइक इनको देता हूँ ताकि दोबारा से कमेंट्री का आगाज़ हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 39वां कराची जिम खाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2026 का ये मैच यहाँ खेला जा रहा है बैंक अल इस्लामी के ताउन से। यहाँ कराची जिम खाना के ग्रोइन कारपेट पर होने वाला ये इस टूर्नामेंट का चौथा मैच है जो दोनों टीमें हम पढ़ रहे हैं। आज के मैच में उमर स्पोर्ट्स क्रिकेट उमर एसोसिएट टॉस हार कर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 133 रन बनाए हैं 5 विकेट खोकर। गुलाम खेल रहे हैं, अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। खाते का खोला नहीं है अपना गुलाम अशर। और यहाँ एजाज की बात है, हम देखेंगे रमीज अजीज जो कि 100 और वहाँ जो मौजूदा रन औसत चल रहा है 9.85। गेंद अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, उसको ध्यान के साथ इज्जत के साथ पूरा खेलते हुए ऑफ साइड पे 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ गुलाम ने अपना खाता भी खोला और 134 रन 5 विकेट खोकर यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर। और इस बार लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को स्वीप करने में कामयाब ज़रूर हुए हैं, लेकिन वहाँ शॉर्ट लेग के फील्डर मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का पूरी तरीके से कहना पड़ेगा 1 रन की सूरत में फ़ायदा ज़रूर उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। दौड़ अच्छी थी, तालमेल की दौड़ थी, पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को कम बैक किया। अरसलान की गेंद इस बार अच्छी गेंद, लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद फिर से इज्जत के साथ ऑन साइड पे खेले और इस 14वें ओवर के अख्ताम पर 135 रन 5 विकेट खोकर यहाँ उमर एसोसिएट टॉस हार कर पहले बारी लेते हुए वाईजे, जिन्होंने टॉस जीता है, पिछला मैच बहुत ही अच्छा खेला था वाईजे ने यहाँ और साफ और क्लीन मैच में फतह हासिल की थी वाईजे ने। आज देखना पड़ेगा उनका मुकाबला। अरसलान का कोटा मुकम्मल हुआ, 4 ओवर 28 रन देके 4 विकेट ली। वेल बोल्ड असलान, पूरी तरीके से बैकफुट पर किया है। माजरत के साथ पहला मैच हार चुके हैं वाईजे वाले जी, दूसरा मैच है उनका और इस बार खेल दिया है। जो ही गेंद को फ्लाइटेड गिरते देखा, गेंद की पिच तक पूरी तरीके से आया है, बल्ले में जो कूदा था वो पूरी तरीके से दिखाया है यहाँ बल्लेबाज ने, बीचों बीच लेते हुए गेंद मिड डाउन की पोजीशन देखते ही रहे हसरत भरी निगाहों से। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और स्पीच खेला है डीप कवर से, तब तक के फील्डर आए फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ, और सूरज का वो गुरूर हमें यहाँ नज़र आ रहा है जिससे ग्राउंड पूरी तरीके से कारपेट चमक रहा है। ग्रीन कारपेट और खूबसूरत नज़र आ रहा है। इस बीच रन चुराया है तेजी के साथ, जो ही गेंद को ऑफ स्टंप पे पड़ते देख के दिखाया रास्ता गली की जानिब, गली के फील्डर थोड़े से दूर थे, उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, तालमेल के साथ 1 रन पूरा किया। यासिर की अगली गेंद, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद की कहीं भी लाइन में नहीं थे, पूरी तरीके से चूके, किस्मत वाले रहे। यहाँ एक उम्मीद सी पैदा ज़रूर हुई थी गेंदबाज के लिए, लेकिन क्रीज पर मौजूद हैं अरसलान जो कि 13 रन की बारी ले रहे हैं 9 गेंदों का सामना करते हुए। आशिर हैं ये बल्लेबाज, शुक्रिया। इस बार कट किया है
देखना पड़ेगा थर्ड मैन पर, तब तक के फील्डर दौड़ रहे हैं, फील्ड कर रहे हैं, तब तक के फील्ड करके थ्रो करें, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। आशिर पहुंचे 15 रन पर, 10 गेंदों का सामना करते हुए गुलाम खेल रहे हैं 2 रन पर। जो मौजूदा रन औसत है और प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 206 का है। एक बड़ा स्कोर और एक बड़ी इमारत सजाने में कामयाब जरूर हुए हैं। 5 विकेट चटक चुकी है लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे यहाँ उमर एसोसिएट के बल्लेबाज। इस बार कट किया है गेंद के उछाल के साथ ही, देखना पड़ेगा तब तक के डीप पॉइंट के फील्डर आए, फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। यहाँ पिछले 3 साल मुसलसल रमीज अजीज जो ई टाउन की जानिब से कप्तानी कर चुके हैं, वो तीनों मैच उन्होंने विन कराए, जितवाए हैं। तीनों मैच टूर्नामेंट में नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं। लेकिन इस साल रमीज अजीज को हम एक्शन में देख रहे हैं कप्तानी के रूप में। उमर एसोसिएट के लिए देखते हैं किस तरीके से रमीज अजीज अपनी और रिवायत कायम रखते हैं। 146 रन 5 विकेट खोकर यहाँ उमर एसोसिएट टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए। सर मैंने आपसे बात भी हो गई है, फिर गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं नहीं, आप टैक्सी करके आए डायरेक्ट। बड़ा आपको पता है बड़ा मैच है, इतवार का मैच है। कितने फोन किया? टैक्सी कर दिया सर। कितने फोन किया? चौथा फोन तो यहाँ गेट का है। हाँ आप पहुँच गए इस बीच। कितने की आए कैसे? गाड़ी में अपनी 4 बोतल रखी है गाड़ी में पानी की, सब डाल रहे हैं। ऑफ ब्रेक गेंदबाज जो कि साहबजादे हैं तौसीफ अहमद के, उनकी इस गेंद को ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, जगह बनाते हुए कवर और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बीच बीच कारपेट का सहारा लेती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आशिर गए ये बल्लेबाज जिन्होंने चौक का जड़ा है। वलीद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑन साइड पे। और इस बार पहले की निस्बत अच्छी गेंद, लेकिन उसको उतनी इज्जत के साथ खेले ज़रूर हैं, लेकिन रन चुराया है। वहाँ रन मौजूद था दोनों बल्लेबाजों के लिए। और इस 1 रन के साथ आशिर पहुंचे 23 रन पर, 15 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी बारी ले रहे हैं। और इस बार उल्टे बल्ले से खेला है, देखना पड़ेगा गली की जानिब। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। और जैसा कि हम कहते हैं अक्सर कि जब आप सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली नहीं करनी चाहिए, कभी कभी उंगली कट भी जाती है। आप सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, रन मिल रहे हैं आपको। और हम यहाँ इस बार खेल दिया है, देखना पड़ेगा किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। गेंद डीप में डाउन बाउंड्री की तरफ टप्पा खाती हुई, कारपेट का सहारा लेती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जहाँ रहना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। और ये साझेदारी हम देखेंगे कितनी की हुई है। गेंद देखें, ऑफ ब्रेक गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को पूरी तरीके से परखा, देखा, विद द स्पिन उसको खेला है बल्ले के बीचों बीच लेते हुए कमान के साथ। आशिर पहुंचे 27 रन पर। वाइड टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहे हैं, बल्लेबाजी की जिम्मेदारियां दी हैं एओ उमर एसोसिएट को। 17वें ओवर का खेल हो रहा है। वहाँ फॉरेन की ओर से शुएब खान हैं, गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने आए हैं। अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। अब तक 1 विकेट चटकाई है और 26 रन दिए हैं शुएब खान ने। बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को बैक फुट पर गए हैं, कट किया है उसे जगह बनाते हुए। देखना पड़ेगा तब तक के डीप कवर से फील्डर आए, फील्ड करें, थ्रो करें। मौका था दोनों बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और उस 1 रन के साथ 159 रन 5 विकेट खोकर
उमर एसोसिएट टॉस हारकर यहाँ बारी लेते हुए कराची जिमखाना के ग्रोइंग कारपेट पर खेला जाने वाला ये 39वां टूर्नामेंट है जो कि मुसलसल 39 साल से खेला जा रहा है। इस बार बंगाल इस्लामी ने जिस तरीके से सजाया है, तारीफ करना पड़ेगी बंगाल इस्लामी की, उनके साथ को इस बीच बायने से एम्पायर और विकेटों के दरमियान आते हुए इस बार आर्म बॉल था, खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन से छू के पूरी तरीके से गेंद गई विकेट कीपर के पास। अपने आप को पहले ही इसे कमिट कर चुके थे, गेंद के आर्म को पहचान नहीं पाए, गेंद गई विकेट कीपर के पास। शुएब के बाहर कदमों का इस्तेमाल किया है, देखना पड़ेगा। जो ही फील्डर को दूर देखा, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। गुलाम पहुंचे 5 रन पर, आशिर खेल रहे हैं 30 रन पर। प्रोजेक्टेड स्कोर 205 का है जो कि एक बड़ा इज्जत बख्श स्कोर है। इस बार ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद थे डीप लॉन्ग ऑन पर। इस बार कट किया है खूबसूरती के साथ, देखना पड़ेगा तब तक कि डीप कॉइन फील्डर आए, फील्ड करें, थ्रो करें। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। 17 ओवर के अख्तिताम पर 164 रन। अब प्रोजेक्ट स्कोर जो है 193 रन का नजर आ रहा है हमें। आशिर खेल रहे हैं एक शुएब खान अपने कोटे का पूरा 4 ओवर कर चुके हैं, 32 रन दिए हैं। एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है शुएब खान ने। और वहाँ कमेटी बॉक्स की ओर से गेंदबाजी जारी रखेंगे वलीद, जो कि तौसीफ अहमद जैसे मायनाज ऑफ ब्रेक गेंदबाज के साहबजादे हैं। वलीद ने अब तक 2 ओवर में 23 रन दिए हैं, खासे महंगे साबित हुए हैं। यहाँ वलीद दाहिने हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज अपनी फील्डिंग सजाते हुए 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे सामना करेंगे। आशिर 31 रन की बहुत ही अच्छी बारी ले रहे हैं और एक उम्मीद है और एक आस है अपने कप्तान रमीज के लिए। वलीद अब राउंड द विकेट गेंद करेंगे। इस बार लेग स्टंप पे पड़ी इस गेंद को बैकफुट पर जाते हुए खेल दिया है, दिखाइए उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की रहा, लेकिन फील्डर मौजूद दौड़ते हुए तब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। फील्डर की दूरी का फायदा उठाया, दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ 164 रन 5 विकेट खोकर उमर एसोसिएट टॉस हारकर बारी लेते हुए यहाँ इस बार खेल दिया है। मिडिल स्टंप पे पड़ी इस गेंद को, उछाल है गेंद में, देखना पड़ेगा कितना उछाल है। एम्पायर का इशारा, टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ फील्ड एम्पायर जो हैं वसीम बुखारी और असगर शाह, सॉरी फ़हीम बुखारी, शुक्रिया राशिद। वसीम हमारे साथ मौजूद हैं 3rd एम्पायर के रूप में। बस 3rd एम्पायर के लिए खासा मुश्किल मरहला होता है जब रेफर किया जाता है। और इस बार अच्छी गेंद ड्राइव किया उसे इज्जत के साथ वापस वलीद की जानिब, जहां वलीद ने फॉलो थ्रो में खुद ही फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। वलीद राउंड द विकेट गेंद करेंगे आशिर को। और इस बार खेल दिया है, ड्राइव किया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन कहना पड़ेगा अच्छी कोशिश थी यहाँ डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की, लेकिन कमान नहीं कर पाए। अरसलान थे, एम्पायर के दोनों हाथ फजा में बुलंद हुए 6 रनों के लिए। और ये अरसलान है जो अब तक इस मैच में 4 विकेट चटका चुके हैं। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। इस वक्त 5वां मौका था उन्हें कैच लेके अपनी झोली में। 5वीं विकेट तो खैर उनकी नहीं होती, लेकिन साथ होता ज़रूर गेंदबाज का। 12 आशिर खेल रहे हैं 44 रन पर 25 गेंदों का सामना करते हुए, एक बड़ी बारी ले रहे हैं अपने बल्लेबाजों के लिए। एक आस है, एक उम्मीद है। और इस बार कट किया है, बैकफुट पर गए, गेंद की उछाल को देखते हुए दिखाई दे रहा, डीप
गली पॉइंट की जानिब फील्डर मौजूद, तब तक जाके फील्ड करते गेंद कारपेट का सहारा लेती हुई रोल करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत। इन 4 रनों के साथ आशिर पहुंचे 44 रन पर 25 गेंदों का सामना करते हुए। और इस बार ये देखिए जिस तरीके से शॉट बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला है, 2 फील्डर हालांकि मौजूद थे, दोनों के लिए कोई मौका नहीं था। गेंद की रफ्तार तेज थी उनकी दौड़ से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अहमद तैयार हैं यहाँ। 81 लगाओ, 181 लगाओ। अहमद जो अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, अब तक 33 रन दे चुके हैं, कामयाबी कोई हासिल नहीं की है। 81 लगाओ, 181, 181। अहमद इकबाल बाहिनियात के लेग ब्रेक गेंदबाज, इस बार फ्लैटेड गेंद थी, ड्राइव किया है उसे गेंद की पिच तक पहुंचते हुए। अब जब तक लॉन्ग ऑफ के फील्डर आते हैं, मौका तो बल्लेबाजों के लिए 1 रन का। अहमद की गेंद को फिर से उल्टे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, पहले जो सीधे बल्ले से खेल के रन लिया था, इस बार गेंद को डॉट के रूप में खेल गए उल्टा बल्ले से खेलने की कोशिश में। और इस बार दिखा दिया है कि देखना पड़ेगा, गेंद में उछाल है, फील्डर गेंद के नीचे हैं और बहुत ही कमान के साथ यासिर मुश्ताक हैं कैचर, जिन्होंने खासी देर गेंद हवा में रही और इसी किस्म के कैच जो होते हैं वो आपको मैदान में लाते हैं दोबारा। लेकिन तारीफ करना पड़ेगी कैचर की, नहीं जाने वाले बल्लेबाज अफनान खान। नहीं जाने वाले बल्लेबाज अफनान। या फिर आशिर मौजूद हैं एक बड़ी उम्मीद के रूप में किस पर। अफनान खान दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, सामना करेंगे अहमद इकबाल का, जो कि अभी अभी एक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अहमद इकबाल भी पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का एक नाम है। अहमद इकबाल बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, कॉम्पैक्ट बैट्समैन हैं ज़रूर। अहमद इकबाल विकेटों के दरमियान से हमारी तरफ आते हुए कदमों का इस्तेमाल किया है, पूरी तरीके से दिखा दिया है, उड़ान भरा दी है उसे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। जो ही गेंद को फ्लाइटेड करते देखा, क्रीज से बाहर आए, अपने बल्ले का वो गूदा दिखाया जो मौजूद है 6 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट यहाँ अफनान का आते ही 6 रन जड़े हैं और इस्तकबाल किया है अहमद इकबाल का पूरे तरीके से भरपूर अंदाज में। और इन 6 रनों के साथ 188 रन, 188, लॉस ऑफ 6 विकेट। इस बार कम बैक किया है अहमद इकबाल ने, अच्छी गेंद तब्दीली के तौर पे, थोड़ी सी लेग ब्रेक गेंद थी, धीमी भी थी पहले की निस्बत, उससे चूके थे, कट करना चाहते थे, गेंद की लाइन से दूर हुए थे। और इस बार पूरे तरीके से आए हैं, गेंद पर चढ़ के खेले हैं, जिसे कहते हैं हम स्ट्रेटर पोजीशन पे। जो ही गेंद को थोड़ा सा फ्लाइटेड इस बार गिरते देखा, कदमों को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और दिखा रहे हैं अपने बल्ले का वो गूदा, वो स्ट्रोक। आते ही झपट पड़े हैं अहमद इकबाल पर और इसी के साथ 92 रन, 192 रन, 192। आखिरी ओवर का खेल रह गया है, 19 ओवर में 192 रन और ये एक बड़ा स्कोर है कहना पड़ेगा। वाईजे जो कि अपना पहला मैच लूज कर चुके हैं यहाँ कराची जिमखाना के 39वें टूर्नामेंट में। आशिर बल्लेबाजी कर रहे हैं 45 रन पर 26 गेंदों का सामना करते हुए। लेकिन यहाँ हम ये कहेंगे आशिर के सामने जिस तरीके से बारी ली अफरान ने, आते ही
धीमा कर दिया है उन्हें अपने सामने। और इस बार ये वाइट बॉल ऑफ लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को पूरी तरीके से विकेट कीपर के पास जाने दिया, जहाँ एम्पायर के दोनों हाथ वाइट के रूप में खुले। और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए पहले से पढ़ लिया था, थोड़ा सा गेंद में तब्दीली की थी, यॉर्कर जिसे कहना चाहिए, फुल लेंथ गेंद की थी, लेकिन उसको फिर भी एक रन लेने से ना रोक पाए बल्लेबाजों को। वलीद वलीद अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, खासे महंगे साबित हुए हैं वलीद। और इस बार खेल दिया है, उठता हुआ शॉट है, ड्राइव किया है, देखना पड़ेगा फील्डर की पहुंच से दूर, एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ में गेंद, दूसरा टप्पा खाने के बाद भी उनके हाथ में गई। जो ही दो टप्पा खाते हुए देखा बल्लेबाजों ने, अच्छी दौड़ के साथ 2 रन मुकम्मिल किए हैं, अच्छे तालमेल की दौड़ दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। वलीद की इस गेंद को दिखा दिया है, बहुत ही बड़ा शॉट है ये, देखना पड़ेगा। डाउन के फील्डर हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं गेंद की उड़ान को, गेंद उड़ान भरती हुई 6 रनों के लिए। एम्पायर बुखारी का इशारा, फ़हीम बुखारी जाना माना नाम एम्पायरिंग के, घरेलू एम्पायरिंग का ख़ास तौर पे बहुत ही तवज्जो के साथ एम्पायरिंग करते हैं। हमारे साथ वसीम जो बैठे हैं, खास पुराने एम्पायर हैं, वसीम भी अप्रोच के साथ एम्पायरिंग करते हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद वलीद की, कमबैक किया है, बैकफुट पर किया है बल्लेबाज को, अफनान जो कि खतरनाक रूप धारे हुए हैं, सिर्फ 6 गेंदों पे 18 रन बना चुके हैं, पूरी तरीके से रन बटोर रहे हैं। इस बार ड्राइव किया है, देखना पड़ेगा तब तक कि डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आए, फील्ड करे, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। और इसी के साथ 19.1 ओवर का खेल मुकम्मिल हुआ, 204 रन 6 विकेट खोकर। अब तक ये इस टूर्नामेंट में जो ये चौथा मैच खेला जा रहा है, अब तक हाईएस्ट स्कोर है, देखना पड़ेगा अब अगले मैचों में कौन सी टीम। और इस बार गेंद डॉट बॉल उसकी जानिब से। और इसी के साथ 205 रन का हदफ पूरा करना होगा यहाँ वाईजे को, जो कि एक खासा बड़ा हदफ है। देखना पड़ेगा किस तरीके से आते हैं मैदान में, किस जज्बे के साथ। इसी के साथ जब तक हम दूसरी बारी शुरू होगी, 100 उस वक्त तक हम आपको स्टूडियो ऑफिस लिए चलते हैं।
Assalamu alaikum, and a very good afternoon here from the Karachi Gymkhana cricket ground, where the fourth match of the Karachi Gymkhana Ramzan Cricket Festival, being sponsored by Bank Islami, and is being played between YJ Sports and Omar Associates. The match is being supervised by umpires Fahim Bukhari and Asghar Shah, while umpire Wasimuddin is here doing the duties of third umpire. The toss was won by YJ, and they put in Omar Associates to bat, and Omar Associates scored 204 runs in the allocated 20 overs for the loss of 6 wickets. And now YJ Sports have to score 205 runs to win this match. This is the fourth match of the 39th Karachi Gymkhana Ramzan Cricket Festival. This festival has been running consecutive years. The only time that this festival was not held was during the COVID period. And now the openers for YJ Sports are walking in while the field has been set by the Omar Associates captain Hassan and Ramiz Aziz, and the two batsmen, opening batsmen, walking into the middle. It's a bright sunny day here in Karachi, and Ramzan is coming along, and there's an eerie silence across the ground. This falls as soon as Ramzan starts, and play about to get underway. YJ have to get 205 runs. Here we go. This one on the middle and leg stump, and a quick single, and that Khurram gets underway. He scores a single, scampered across, and now Harris is taking guard. And this was I think he had made his ground. And here comes Hamza to Haris. This one again moving away. Let's see what the umpire says. Umpire signals wide. And that takes a score on to 2. Haris Ali Khan, right-handed batter, facing and Khurram Manzoor on the other end. Hamza Sohail, left arm medium fast bowler, is doing some repairs to his shoes, and play has been stopped for a while until Hamza gets his shoes right. He seems to be getting another pair. The Ramzan Cricket Festival has been going on for 39 years, which is amazing. And it is a paean to the commitment of Karachi Gymkhana to sports and to this particular tournament, because this was the pioneer tournament, the mother of all cricket tournaments in Ramzan when they started. And after that, then there have been a lot of different tournaments. Here comes Hamza. And this one is being caught at a
third man almost on the boundary, and he had an almighty swipe at that one. Got a outside edge at the bottom of the bat, and it flew to the fielder at third man, and he took a very well judged catch, excellent catch there, and that takes the score for YJ. They are now 2 for the loss of 1 wicket. And the new batsman was coming in while the field adjusting for current run rate is 6, while the required run rate is 10.25 runs an over. Right-handed batsman taking guard. This one, the wicket keeper appealing for a caught behind. It's rather and Amir Khan is the name of the new batsman in. Yeah. It's going to be Hamza, an eventful first over, who is going to bowl to Amir Khan from the club road, and here he comes in. This one pitched on the middle stump, and he had an almighty go at that one. Straight to the fielder, and we welcome our scorer of many years, Rashid Aslam, to the pavilion position. I wonder who was doing the scoring in his absence. Hamza to Amir Khan. Left arm, medium fast, and this one outside the off stump, and guided it to a wideish third man. 4 runs. That takes the score on to 7. This one is a beautiful shot there. This ball pitching outside the leg stump, and he scooped it to fine leg. 4 runs. Lovely shot there. Over pitched on the leg stump. That takes the score on to 11. And that is also the end of the over. 11 11 run हुए 1 wicket के नुकसान पे, and the required run rate is now 10.21, and the partnership is of 9 of 4 deliveries, and it's Amir Khan who will face, let's say, bowling change pehla over. Afnan Khan, and wow, he's been unceremoniously dismissed to the square leg boundary. 4 runs. Great shot by Amir Khan. Afnan being given a welcome by the YJ batters.
Afnan to Amir. This one, a better delivery, good line and length, and Amir Khan very carefully forward defensive. The fielders are on the line, edge of the line, and that is a lovely shot there. He's been flicked to the square leg boundary. 4 runs all the way. A lovely shot to see. And it's going to be Afnan now to Khurram. Khurram Manzoor, who has played 16 tests in the Pakistan test side. And it's Afnan to Khurram. This one, he made room for himself. And 4 runs to the long on boundary. 4 runs, great shot. Showing what he can, do. He can be a dangerous batsman for YJ. And there's a replay. This one, the bowler followed him, but he made good account of himself. And it's going to be Afnan to Khurram, who's on 13 of 4 deliveries. Here comes Afnan. This one, again, a similar line delivery, but this time he couldn't get him. Khurram couldn't get him away. It goes to the backward square leg fielder straight to him, and no chance of any runs. Afnan. This one pitched on the middle stump, and good line, good length. Khurram Manzoor couldn't do anything to him. No runs, no damage done. This one is being scooped. Let's see if it was. The fielder couldn't get to it, the square leg fielder. 4 runs, great shot there by Khurram Manzoor, and that takes the score on to a lovely shot. The fielder tried a dive but it had already crossed the boundary line. 4 runs, and that takes the score on to 24 for 1. And this is at the end of 2 overs. The partnership between Amir Khan and Khurram now on 22. The target is 205. And from the club row end, Hamza to continue. Here he comes to Amir Khan. And this was a bad delivery. Amir went down the wicket and pulled it towards square leg, and the batsman crossed over for 2 runs, and that takes the score on to 26. 26 for 1. Hamza. Oh my. It's uppishly cut towards point, and 1 run, and there was a shy at the bowler's end, but no damage done. 27 for 1. Khurram now facing Hamza. Hamza coming in from the club road end to bowl to Khurram. Khurram brings a lot of experience to this game. And this one, lovely shot through the line, and 6 runs to long on. It's a treat to watch. Khurram showing his class there. This was outside the off stump. There was enough space, and he drove it straight through the line. 6 runs. Beautiful shot there by Khurram, and that takes the score on to 33 for 1. And here's a replay again at this one. There we. Oh, he would have been out if he had hit
a direct hit would have had him. This one to backward point, good piece of fielding thereby. That and Hamza proving expensive, 6 into 8, or 9 runs giving in this over already, and 4 deliveries have been bowled, 2 have yet to be bowled, and it's going to be Hamza to Khurram Manzoor, and slight changes in the field. This one. Here comes Hamza to Khurram Manzoor. This one is picked it off his hips to backward square leg for a single, and that takes score on to 34. For the loss of 1 wicket at the end of 3 overs, and they're going at almost at the required run rate, which was at start of the innings 10.25. And from the governors and YJ Sports at the Afnan to continue from the governor's house end, and to win YJ requires 171 runs of the 100 and some odd deliveries. Here comes Afnan to Khurram. This one on the middle stump, and it's been driven to a wideish long off. 4 runs. Another beautiful shot there by Khurram Manzoor. He is not going to spare anything which lands in these areas, the sweet spot. And the current run rate is 12. They are ahead of the asking rate. Here comes Afnan to Khurram. And this time, it's to the leg stump, leg side rather. 4 runs. Great shot there by Khurram. And Khurram stamping his class on this YJ innings. And now Afnan getting a piece of advice. Got some advice. Let's see what he is going to do. Afnan to Khurram. This time he saw Khurram move towards the leg side and followed him. So no runs. This time again, and this time the fielder at backward point gets it on the boundary, and Khurram ambles across for a single that takes the score on to 43. The target is 205, and it's Amir facing Afnan. Wow, that was almighty. Oh, he's been caught. We can't see this from here, but he's out, and he's played he's caught at mid-wicket. Here we go. And at the boundary. Good catch.
Good catch there by the fielder over there at mid-wicket, and that is the end of Amir Khan. He scored 9 of 7 deliveries at a strike rate of 128.27. And twirling his bat, walking into the center is Arslan Fazl of YJ. Now, this is the 4th over, and let's see what how much they can score during this period of play, where only 2 fielders are allowed outside the circle. One should not lose more wickets, and while trying to get about 50 runs, Arslan Farzand. And this is the 4th match of the 39th Karachi Gymkhana Ramzan Cricket Festival, Afnan. And places it, the batsmen scamper across for a single. And 44 for the loss of 2 wickets at the end of 4 overs. The fall of wickets: first wicket fell for 2 runs, and the second wicket fell when the score was at 43. YJ Sports chasing 205 in the 4th match of the 39th Karachi Gymkhana Bank Islami Ramzan Cricket Festival, and it's going to be Jawad from the Club Road end. There's a bowling change. And Jawad is going to be bowling to Arslan, the new batsman. Jawad of Omar Associates. And Jawad finds that gap on the leg side. First ball, 4 runs. Great beginning by Jawad. Arslan, oh, welcome to Jawad. 4 runs. And that takes Arslan to 5. Jawad to continue. And umpire signals wide, way outside the off stump. That takes a score on to 49 for the loss of 2 wickets. And this is the 5th over being bowled by Jawad from the governor's from the Club Road end, and he'll be bowling to Arslan. And before the bowler could bowl, Arslan moved about 6 wickets outside the off stump, and Jawad had to take this one. Goes to the mid-wicket area, and the batsman cross over for a single, and this takes a score on to 50. So 50 for YJ Sports comes in 4 overs and 3 deliveries, and Jawad. This one, a lovely shot there, smacked it through the covers, 4 runs. Great shot, great stroke play. Look at that. He saw the ball outside the off stump, make space for himself, and played it straight to the cover boundary. 4 runs, and that takes a score on to 54 for 2. YJ Sports in the 5th over. And my word, Khurram is
And 55 for the loss of 2 wickets. YJ Sports chasing a total of 205 runs to win, scored by Omar Associates. Uh, Ramiz Aziz used to captain. Oh, that was short, and let's see. 4 runs to the mid-wicket boundary. Great shot there. Made space for himself and pulled it to the mid-wicket boundary. Khurram is now on 42, is playing a great innings there for his team. This one again. Oh. The bowler tried. He slid across, tried to take a catch, but failed it. And the ball crosses the boundary at square leg. 4 runs again. This one is a misdirected ball and asking for punishment, and it got what it deserved. That takes the score on to 63 for the loss of 2 wickets, and this is the 6th over being bowled. And wow, this one is Khurram. 6 runs, a lovely. He took 2 steps outside the wicket, down the wicket, and drove it to the long on boundary, and Khurram Manzoor completes his 50 of 21 deliveries. He scored 52 of 21. Great innings. And my word, this one again, another 6 to mid-wicket. That takes him on to 58. He's going great guns. 58 of, he scored 20 runs of 4 deliveries. A lovely shot, sailing across mid-wicket. Fence, Ramiz, and another pull, another 6. Wow, this is quite an over for YJN's Khurram Manzoor, showing with a vengeance how he can bat in this format of the game. And that takes him on to 64 of 23 deliveries. And we have, and this one again a 4. Boundary. And 30 runs came off this over, probably the most expensive over up till now of this tournament. Maybe. Yeah. Khurram Manzoor has shown what he's made of. He scored 68 runs of 24 deliveries. The current run rate is 14.17, and the required run rate has dropped to 8.57. This was quite an over, and Jawad was unfortunately at the painful end of this contest between Khurram Manzoor and Jawad, and Khurram Manzoor. Oh my God, this one, we are replaying the whole over because it's all boundaries. 6s and 4s, this one too long on. And this one to mid-wicket. Oh, another one to mid-wicket. And wow, this is a 4. And a great over, fireworks if for everyone to see. This is what T20 cricket is all about, and is changing his bat, or
Yes, so Khurram Manzoor just changes bat, I guess. With that over, having scored 30 runs, that might have cracked or something. And it's going to be Jawad to Arsalan. A good delivery, Arslan carefully back to the bowler. Jawad. Arslan made space for himself and pulled it gently to mid-wicket for a easy single. The score goes on to 86. And now it's going to be the explosive Khurram Manzoor facing Jawad. This was been driven to long off for a single that takes the score on to 87. And Jawad seems to have kept him quiet. This is between the two fielders. 4 runs. Great placement by Arsalan at backward square leg. 2 fielders converged on that ball, but it crossed the line. And there you go. Couldn't stop it. Here comes Jawad to Arslan. Turned it round the corner towards square leg, and for a single. The last ball will be faced from Jawad to Khurram. And this one's been driven powerfully, but it stopped on the close-in fielder couldn't really stop it. It went to the line, and that takes the score on to 94. Khurram is 71 of 26 deliveries, and Arslan 12 of 8 deliveries, and the partnership is 51 of 19 deliveries. And a great partnership between Arslan Farzand and Khurram Manzoor. Khurram showing his class. And it's going to be, let's see who's going to bowl from the, Israr Ahmed is going to bowl from the governor's house, and he will be bowling to Arsalan, who is now on 12 of 8 deliveries, and the partnership is growing. And great for YJ, 51 of 19 deliveries, and the target is 205 runs. And here comes Israr. This one was a wide outside the leg stump, and Arslan just heaved it to the wideish, fine leg for 4 runs. That takes a score on to 98. 98 for the loss of 2 wickets, and this is the 7th over being bowled. The fielding restrictions have been are no longer there, so you can have 4 more than 2 fielders outside. You have to have 4 fielders inside. This one again a repeat of that delivery, and Arslan couldn't connect, and umpire signals wide. Fahim Bukhari signals wide, and that takes the score on to 99. Israr to Arslan. This one again on the leg stump, and just Arslan bats it towards square leg for a single, and that is a century. 100 runs for YJ scored at
7.2 overs of 44 deliveries. 100 of 44. And this one, Khurram made space for himself and wanted to hit a 6, but saw that the ball was, he was not in a position to do it. He gently prods it towards mid-wicket for a single, and another single now by Arsalan. The target is 205, so 103 runs required of about 12.2 deliveries. And Israr. This one, yes, tied the batsman down, Khurram, and it's hard to tie him down. You have to bowl a good, very good line and length. Here comes Israr. And again, following the same pattern, following the batsman, and then crossover for a single, and it's 103 for the loss of 2 wickets. YJ, in reply to 205, the 204 scored by Omar Associates, and with that, I'm going to hand over the commentary to Mirza Qamar Beg, my associate, who will continue with the commentary in his lovely Urdu language. And let's see. Here we go. Mirza Qamar Beg. शुक्रिया मियाँ शौकत हुसैन साहब। जब मियाँ शौकत हुसैन हम कहेंगे ज़रूर, क्योंकि जिस तरीके से कमेंट्री से हम महसूस होते हैं, वैसे क्रिकेट की इंग्लिश कमेंट्री, अंग्रेज़ी कमेंट्री ही दिलचस्प होती है जब मैच दिलचस्प हो रहा हो तो, और मियाँ शौकत जैसे कमेंटेटर जो कि कर रहे हो तो हम पूरी तरीके से महसूस होते हैं उनकी कमेंट्री से। शुक्रिया। खुर्रम मंजूर की खूबसूरत इनिंग ने और खूबसूरत कर दिया इस मैच को, जिस तरीके से बहादुरी के साथ खुर्रम मंजूर ने शो किया है, दिखाया है कि टेस्ट प्लेयर ही होता है। जिस तरीके से बल्ले के बीचों बीच लेते हुए पूरी तरीके से बैकफुट पर किया है उमर एसोसिएट को। यहाँ जब आज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अरसलान को इस बार, अरसलान पहले ही से शफल कर गए थे, खासा शफल कर रहे हैं अरसलान, अपने आप को फंसा लेते हैं, अक्सर फंस जाते हैं इतने शफल में। तो आपको जहाँ का गेंद है वहीं खेलें। खुर्रम को देखें, खुर्रम जिस तरीके से खेल रहे हैं, और इस बार खेल दिया है, देखना पड़ेगा। उठता हुआ शॉट था लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, एम्पायर के दोनों हाथ फजा में बुलंद हुए 6 रनों के लिए। बॉल प्लेट अरसलान पूरा रूप धार रहे हैं खुर्रम मंजूर का, जिन्होंने बहुत ही दिलकश यहाँ बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। और वाईजे के बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी आस यहाँ पैदा की है। खुर्रम की शानदार बल्लेबाजी ने शो किया है। टेस्ट क्लास ही होती है, चाहे वो 20-20 खेले, चाहे वो 50-50 का मैच खेले, लेकिन टेस्ट प्लेयर कंप्लीट जब होता है तो यहाँ नज़र आता है। खुर्रम मंजूर ने दिखाया है, बहुत ही दिलकश बारी ली है, 74 रन की बारी ली है अब तक, 30 गेंदों का सामना करते हुए कमान के साथ। बानवे रन चाहिए हैं, 66 गेंदों का सामना करना पड़ेगा वाईजे स्पोर्ट्स को।
अरसलान की गेंद खेल दिया है खुर्रम ने, और ये अरसलान थे ये बल्लेबाज। एक जीवन दिया है यहाँ अरसलान को, ऐसे मौके पर जीवन देना, जिंदगी देना ये जुर्म है फील्डर के लिए। आपको कमान के साथ ये कैच आपके पास आ रहा था, आपकी नज़रें नहीं थी, और ये खासा महंगा साबित हो सकता है। इस बार खुर्रम थे बल्लेबाज जिन्होंने अगले कदम पे ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की जानिब खूबसूरती के साथ, तब तक के फील्डर आके फील्ड करें। एक रन पूरा किया है खुर्रम ने। अरसलान तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार दिखा दिया है, देखना पड़ेगा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, और ये सदमा है बड़ा। खुर्रम मंजूर आउट होकर पवेलियन में आए हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी बारी खेली है यहाँ खुर्रम मंजूर ने, अपनी क्लास दिखाई है। जो जो क्लास उनकी है खुर्रम मंजूर की, हमने खासे अरसे बाद इतनी बड़ी बारी देखी है किसी बल्लेबाज के यहाँ कराची जिम खाना के ग्रोइंग कारपेट पर। वेल प्लेड खुर्रम मंजूर, पूरी तरीके से बल्लेबाजों पे, जो गेंदबाजों को उन्होंने धोया है, जिसे कहते हैं क्रिकेट में वेल प्लेड खुर्रम, व्हाट अ क्लास इनिंग। और पूरी तरीके से अपने बल्लेबाजों को मैच में लेके आए हैं, और परेशान हैं थोड़े से हमें नज़र आ रहे हैं। रमीज़ अजीज़ जो कि कमान रखते हैं, उनका पहला ओवर बहुत ही 30 रन का था। तीन पूरी 6 गेंदों पे बाउंड्रीज ली थी उन्होंने, और अब मौजूदा रन औसत जो चल रहा है 12.0। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि खुर्रम मंजूर के आउट होने के बाद कौन बल्लेबाज है जो यहाँ बारी संभालता है, संभाला देता है वाईजे स्पोर्ट को। लेकिन खुर्रम मंजूर अपना काम कर गए पूरे तरीके से, और झोली में रख गए हैं मैच को। अरसलान ने कामयाबी हासिल की है खुर्रम के रूप में। खुर्रम जो अरसलान अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 3 रन देके एक बड़ी विकेट यहाँ चटकाई है खुर्रम के रूप में। खुर्रम नए जाने वाले बल्लेबाज यासिर हैं जो सामना करेंगे अरसलान का। 29 रन की बारी ले रहे हैं 18 गेंदों पर अरसलान, और ये मचलते हुए अंदाज में एम्पायर से इल्तिजा ज़रूर की थी, लेकिन एम्पायर ने कान ना धरे, और बैट्समैन में भी क्रीज में मौजूद एम्पायर का इशारा के डाउन द लेग थी। रिप्ले में भी हम देखेंगे गेंद टपकाने के बाद। इस बार अच्छी गेंद थी, उसको उतने ही अच्छे अंदाज में इज्जत के साथ ड्राइव करते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया यासिर ने। और 10वें ओवर के अख्ताम पर 117 रन। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर खान, जो कि दिलकश कमेंट्री, अंग्रेजी कमेंट्री से हमें महसूस करेंगे। नाउ ओवर टू उमर खान। Thank you, Mr. Mirza Kamar Beg. What a fascinating innings we all have experienced here at Karachi Gymkhana. Khurram Manzoor playing a blinder for YJ Sports. But the job is still not done. 10 overs remaining. 88 runs to get. Arsalan Fazan batting on 29. This time up in the air, chance for the fielder. It will be a tough one. He's going for it. Valiant effort. Harun Arshad, the fielder. What an effort.
Ramiz would be taking a sigh of relief that Khurram Manzoor is back in the pavilion. He took him to the cleaners. This time another dot ball. 30 runs were scored of the first over of Ramiz. 3 sixes and 3 fours all around the park. From Khurram Manzoor, but now it's just singles and nudging around. The required rate is a little bit over 9. As you can see, the effort of the fielder, he was flying. Good camera work. They caught an eagle in the sky and then they caught an eagle in the ground. This time up in the air. Does it have the distance, the legs? No. Another wicket. And slowly and gradually, Omar Associates are crawling back in the game. 119 for 3 now. Yasir Mushtaq gone for 2. While we're enjoying this game, let me update you with the score of the T20 World Cup Super 8 game from the Pakistan group. England and Sri Lanka playing today. England restricted on 146, courtesy brilliant bowling and fielding by Sri Lanka. 147 is the target. And Sri Lanka has just started their innings. Pathum Nissanka in great form today, amongst the leading run scorers of the tournament, just behind Saibzada Farhan. The new batter in is Nadeem Javed. This time, brilliant comeback by Ramiz Aziz. This over went for 2 runs and another wicket. 119 for 4. And now the required rate, which was down to 8.5 while Khurram Manzoor was batting, it has crawled up to 9.5 within an over. 86 of 54. Arsalan Farzan still on the crease, batting on 30. A quick single taken this time. Nadeem Javed off the mark. Israr bowling his 3rd over.
Certainly, YJ Sports look a complete different batting line. It was a total different story while Khurram Manzoor was in the middle. Scored 75 of 32 with a strike rate of 234, including 10 fours and 4 sixes. This time, single taken by Nadeem Javed. Brilliant over so far. 4 runs off the over. Five runs off the over. This time heaved it towards the long on fielder. Chance, and he is caught. So the wickets keep coming. YJ Sports are going down like a house of cards. They were 116 in the 10th over for the loss of 2 wickets. And now they're 5 down for 125. Last 3 wickets in 9 runs. Ramiz making a brilliant comeback, going for 30 runs in the first over. He's came back with 2 wickets and given away 3 runs in the next 8 deliveries. New batter in is Danish Rafiq. This time single towards long off. Single taken towards the cover. Another single. Singles won't damage Omar Associates as the required rate is now climbing towards 11. In the last 3 overs, YJ Sports have scored only 9 runs. And this time hit straight towards the long on, 1 bounce to the fielder. So 10 runs and 3 wickets in the last 3 overs.
Last 30 balls, as you can see, 3 wickets and 26 runs. Majority of those 26 runs were scored by Khurram Manzoor, who scored 75 today of 32 deliveries, hitting 4 sixes and 10 fours. But now YJ Sports under a lot of pressure. They've already lost their first game, losing here today. Will put them in a very weak position in the group. Sam, another single taken. Sam, full delivery, hit towards the point, no run. And with every dot ball, the required rate is climbing up. What seemed like an easy chase when Khurram was in the middle, things look very difficult now for YJ Sports. It's time, he's trying to hit it, the ball is in the air, chance for the fielder and another one gone. Arbaz is the catcher, it was not an easy catch. He judged it well. And the collapse of YJ Sports continues. Sixth wicket down now. They've lost 4 wickets in the last 3 overs. This time another single towards the long off. Another single. 132 now. This time try to just manage to get over the head. 2 runs added to the total. And with that now the required rate is almost at 12. 6 overs remaining. Ramiz Aziz. This time he's middled it and it's over mid-wicket for 6. It's been a while since we've seen any boundary, but Arsalan Farzan was in the middle, batting for a while, he's settled. And I think if YJ Sports have any chance, Arsalan Farzan should go all the way till the end.
This time he's middled it again. Ball is racing towards the boundary, but the fielder at long on covers it up. Arsalan now batting on 46. This time another single. 9 runs of this over so far. But moreover, Arsalan is still in the middle. And the game is still on while Arsalan is still there. This time guided it beautifully, but only 1 run. So 10 runs of this over. The required rate is at 12s. Two balls remaining in this over. This time, no run added to the total, straight towards the short mid-wicket. This time, couldn't find the gap. Another single to long off. So 11 runs of that over, 145 YJ Sports after 15 overs. Arsalan batting on 48. And the required rate is exactly 12 runs an over now. 60 required of 30 deliveries. This time use the feet and completely missed it. Although the keeper fumbled and missed it in the first attempt, but he was so far down that he got a second chance. It's referred to the third umpire. All eyes towards the third umpire room, where they'll be reviewing what happened. So the keeper fumbled it on the first time. The batter had ample amount of time to get back, and it's a very close call. Seems like he's managed, but we'll see what the umpire says. It's touch and go. It would have been a simple dismissal if the keeper collected it on the first time. And thanks to the fumble, the umpire has made his decision. It is not out. Ashir Ahmed, the keeper. He was dancing around the batter in the middle, completely beaten. He was gone for all money. But he gets another life thanks to a fumble. This time rotated strike. Arsalan now batting on 49. He's got a life, an important life when it comes to YJ Sports, because he's the only hope alive right now.
This time another action replay, but the batter was Hassan. No mistake done by Ashir this time. He got it, and the 7th wicket is down for YJ Sports. But Arsalan Farzan is still in the middle. The batter danced around the track without coming in the line of the ball. Easy stumping. Mohammad Hassan gone for 4. YJ Sports from 116 for 2 are now 146 for 7. 5 wickets down for 30 runs in the last 6 overs. Waleed off the mark with a single. Now Arsalan back on strike, batting on 49 of 35. But more importantly for Omar Associates, this over has just given away 2 runs. Another single. 50 completed for Arsalan. Also got 4 wickets. He's having a wonderful day. Can he win it for his team as well? That's the big question. Flighted delivery, another single taken. The only chance YJ Sports has is Arsalan faces 80% of the remaining deliveries. So 56 required of 24, which is almost 15 runs in over. 14 runs to be precise. We need at least 2 boundaries and over. As you can see, the fall of wickets. 116 was the 3rd wicket. And then 119, 125, 130, and the last wicket, 146. 5 wickets down in the last 30 runs. Single taken, and now Arsalan is on strike. 55 runs away of 23 deliveries. This time is guided it towards the 3rd man, another single. They're not even trying to get boundaries. Will Waleed go for the big hit? Single taken towards long on. Just 3 runs off this over. And the required rate over 15s now. This time flighted delivery, hit it towards the mid wicket. Chance for the fielder, no chance. Over the head for 6. Arsalan is still fighting. He got 3 singles of the first 3 deliveries. And this time, trying the reverse hit straight to the fielder. No run added to the total.
9 runs of this over. They need a boundary on this delivery. This time he made room and hit it towards the mid-wicket for a single. So after 17 overs, they're 159. 46 runs required of the last 3 overs. They desperately need a big over of 20, 25. Can Arsalan do it for YJ Sports? Batting on 58. Hamza is the bowler. Earlier, any bowler who bowled in the first 10 overs were taken to the cleaners by Khurram Manzoor earlier. So they all have expensive figures. But in the last 7 overs of this innings, we've seen a major dip in the run rate of YJ Sports. Arsalan Fazan still in the middle trying to fight for his team. 46 of 18 to keep the hopes alive for YJ Sports in this tournament. Overthrows decided against it. Single taken. Hamza Sohail got a wicket. This time he's timed it beautifully, but only will be able to manage 1 run. Arsalan back on strike. 3 runs of the first 2 deliveries. Was also a wide delivery bowled. But now, desperately, they need at least 3 boundaries of the next 4 deliveries to stay in this match and keep their hopes alive. 162 for 7. Low full toss. This is good for Omar Associates. Singles won't hurt them. They just need to avoid boundaries for another couple of deliveries and the game will be over. Another single towards the point.
शुक्रिया उमर खान। और अब 40 रन चाहिए 12 गेंदों पर। इस बीच वाइट का इशारा एम्पायर की जानिब से और अब मैच खासी हद तक उमर एसोसिएट की जोली में। इस बार पुल के अंदाज में खेले हैं, देखना पड़ेगा किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। अरसलान फाइटिंग कर रहे हैं अभी तक। 11 गेंदें 35 रन चाहिए, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी अरसलान की, जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। खुर्रम ने जो इनिंग खेली थी उसको कहना पड़ेगा, खुर्रम की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना चाह रहा है। इस बार कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तारीफ करना पड़ेगी रमीज़ की भी, जिस तरीके से कमबैक किया है रमीज़ ने खुर्रम के आउट होने के बाद। और इस बार देखना पड़ेगा गेंद तब तक के डीप मिड ऑन से फील्डर आए, फील्ड करें। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया अरसलान ने। अरसलान 1 ही रन पूरा किया है, 66 रन पर पहुंचे अरसलान। और इस बार शफल करते हुए पुल के अंदाज में खेले हैं, देखना पड़ेगा तब तक के फील्डर आए, फील्ड करें डीप से। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अफान अपने कोटे का 4था ओवर कर रहे हैं और अब तक 40 रन दे चुके हैं। इस पार्टनर साझेदारी में 26 रन बन चुके हैं 19 गेंदों पे। एक उम्मीद है ज़रूर, लेकिन खासी हद तक दूर है, मैच से दूर होते जा रहे हैं। और यहाँ रेफर हुआ है टीवी एम्पायर के लिए। और यहाँ एक और झटका कहना पड़ेगा वाईजे के लिए, जबकि उनके उन्नीस गेंदों पे 26 रन की साझेदारी करके जा रहे हैं। ये बड़ा झटका है जो इस मौके पे लगा है। मौजूदा रन औसत जो है 9.21। आज के रेट और बढ़ता हुआ। अरसलान खेल रहे हैं 66 रन पर। एक उम्मीद है, एक आस है, लेकिन खासी मेहनत करनी पड़ेगी अरसलान को। स्ट्राइक पूरे तरीके से अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। नए जाने वाले बल्लेबाज अहमद इकबाल हैं, जो कि खासी सीजन नाम है पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का। कुछ करके दिखाना पड़ेगा अहमद इकबाल को भी। अगले कदम पे आके ड्राइव किया है, लेकिन डॉट बॉल के साथ अहमद इकबाल को प्रूफ करना होगा अपने तजर्बे का। एक 172 रन 8 विकेट खोकर 205 रन का पीछा करते हुए वाईजे स्पोर्ट्स। रमीज अजीज जो कि पिछले 3 सालों से ई टाउन को कप्तानी के रूप में टूर्नामेंट जितवा चुके हैं। देखना पड़ेगा इस बार उमर एसोसिएट की जानिब से कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी में तो कोई शक नहीं। रमीज अजीज़ का जिस तरीके से तजर्बेकार हैं, 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं रमीज अजीज़। इस बार ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, अरसलान ने
दिखाना चाहते थे, गली पॉइंट का रास्ता, लेकिन फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। हमजा अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं और अब तक अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी की है। 27 रन दे के एक विकेट ज़रूर चटकाई है इस ऐसे मौके पर। कप्तान ने भी उनको आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी है। इस बार उड़ता हुआ शॉट है, देखना पड़ेगा तब तक के फील्डर आए, फील्ड करें। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। अरसलान पहुंचे 67 रन पर 49 गेंदों का सामना करते हुए। और अब बहुत ही आसान कर दिया है यहाँ उमर एसोसिएट के कप्तान और फील्डरों ने और गेंदबाजों ने खासी मेहनत की है। खुर्रम मंजूर की जो एक बारी थी, बड़ी बारी को पूरी तरीके से घबराए नहीं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार ड्राइव किया है सीधा बॉलर की जानिब। रन लेने का कोई मौका नहीं। अरसलान खेल रहे हैं 67 रन पर, अच्छी बारी ली है अरसलान ने। 39वां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2026 का ये मैच जो कि खेला जा रहा है बैंक इस्लामी के ताउन से, इस टूर्नामेंट का एक अच्छा बड़ा स्कोरिंग मैच है जिसे कहना चाहिए। 205 का पीछा कर रहे थे उस, और क्या कैच लिया है, शानदार कैच। फील्डर रमीज़ अजीज़ी हैं जो कप्तान भी हैं, सिवाय रमीज़ अजीज़ जो डाउन हुए थे इस मैच में। सिर्फ एक ओवर में जो 30 रन दिए, उसके बाद रमीज़ अजीज़ ने जाहिर है वो तजर्बा दिखाया है पूरा अपना। तारीफ करना पड़ेगी रमीज़ की। अरसलान आउट होकर पवेलियन में आ रहे हैं। 67 रन की बारी ली है, 51 गेंदों का सामना किया है, वॉल प्लेड। लेकिन खुर्रम की उस इनिंग को पूरा नहीं कर पाए जो उन्होंने शुरुआत में दी थी और छोड़ के गए थे। उन पे जिम्मेदारी तो निभाई ज़रूर, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज लड़खड़ाते रहे, हड़बड़ाते रहे, अपनी कश्ती को बीच मझधार में छोड़ते हुए जाते रहे। जो खुर्रम ने किनारा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल 200 रन 205 रन का हदफ एक बड़ा हदफ होता है, लेकिन हिम्मत ज़रूर की यहाँ वाईजे स्पोर्ट्स के। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ खुर्रम और अरसलान यही दो बल्लेबाज थे। अगर कोई तीसरा बल्लेबाज हिम्मत दिखाता तो शायद मैच और क्लोज जाता, लेकिन ये मैच ऐसा था, इतना बड़ा स्कोर था कि दो बल्लेबाजों से काम नहीं चला। यहाँ एक बल्लेबाज ने और जोहर दिखाने थे। हमजा फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार ये गेंद वाइट का इशारा एम्पायर की जानिब से। इनिंग का आखिरी गेंद फेंका जा रहा है। हमजा अब तक 3.5 ओवर में 30 रन देके 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। इस बार इसी के साथ इस मैच का खात्मा भी हुआ और वाईजे स्पोर्ट और उमर एसोसिएट के बीच खेले जाने वाले में इस मैच में उमर एसोसिएट ने 29 रन से कामयाबी हासिल की है। और उसी के साथ हम आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं और ग्राउंड पे हम जाएंगे जहां उमर खान मैच प्रेसिडेंट्स के लिए मौजूद होंगे। उमर खान नाउ उमर ओवर टू उमर खान।
Gymkhana Bank Islami Ramzan Cricket Festival 2026, where another fascinating game was played between Omar Associates and YJ Sports. In the end, the match was won convincingly by Omar Associates. So big hand for Omar Associates for winning their opening game. Let me introduce my presentation party for today. Our chief guest of the day is Mr. Raisuddin Sheikh, former managing committee member and member balloting committee, Karachi Gymkhana. We've got with us as our guest of honor, Mr. Yusuf Akram Shura, honorary secretary squash. Another guest of honor for the day is Mr. Hanif SD, member tournament committee, Karachi Gymkhana. We've got with us the convener of cricket, Mr. Nadeem Dalia. We've got with us secretary of cricket, Karachi Gymkhana, Mr. Jam Nafis. And we've got with us Mr. Jam Zain, captain Sunday cricket, Karachi Gymkhana. And Rafe Safdar, first class cricketer and member of Karachi Gymkhana cricket team as well. So we'll start off with the most electrifying innings for the day. And it was a treat to watch Khurram Manzoor for his brilliant 75 of 32. For electrifying innings, please come forward. A gift hamper from Candyland. I would request Mr. Raisuddin Sheikh. What an innings by Khurram Manzoor. 10 fours, 4 sixes. It was a treat to watch. खुर्रम भाई थोड़ी बात भी करेंगे आपसे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट एन इनिंग्स, अलग ही एक टोन लग रही थी जब आप मिडिल में थे. नहीं, रिक्वायरमेंट भी यही थी और जिस तरह की उन्होंने टारगेट दिया, बड़ी टीम थी और लग के खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है. 10 से ऊपर की एवरेज थी और थोड़ी सी मिस्टेक की वो फिनिश नहीं कर पाया और ऑलमोस्ट सर्कल में डोमिनेट कर गए थे. 6 ओवर में 85 रन थे और 1 आउट था, मगर उनको क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है, स्पेशली जो कैचेस पकड़े हैं, आउटस्टैंडिंग. और बड़ी टीम ये होती है कि प्रेशर मैच में जब थोड़ी सिचुएशन टाइट हो रही हो तो उसमें अपने फील्डर्स जो हैं वो बॉलर्स को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी. Very well played. It was a treat to watch. Best of luck. Khurram Manzoor for his brilliant 75 of 32, 10 fours, 4 sixes, and the team was going at 12s when he was batting. Now for the man of the match, we had some brilliant performances by Khurram Manzoor, Arsalan Farzan, but in the end it was Arbaz Khan for his brilliant 53 of 23 deliveries, 8 fours and 2 sixes. Man of the match for today, Mr. Arbaz Khan. I would request Mr. Raisuddin Sheikh to please present the cash award of 3,500 and gift hampers from Candyland, Shield, Angeti and Dayfresh. Before moving to the mementos, I would request the captain of Omar Associates, Mr. Ramiz Aziz, to please come forward for a quick words. Ramiz Aziz, Omar Associates के कप्तान, कुछ बात करेंगे आपसे. First of all, तो जी congratulations for winning the game. इस दफ़ा फिर कप्तान लेकिन जर्सी चेंज है. नहीं, ये तो पार्ट ऑफ गेम है और इस तरह आप सम टाइम आप किसी टीम से खेलते हैं, सम टाइम आपको टीम चेंज करनी पड़ती है. और जो लास्ट 3 साल भी मैं खेला हूँ इटॉन के लिए, तो वो आजम भाई की इजाज़त से खेला हुआ था. तो इस दफ़ा आजम भाई ने कहा इधर से खेलना है तो इधर से खेलना है. क्या चल रहा था पहले ओवर में? खुर्रम भाई जब खेल रहे थे 30 रन आए ओवर से और फिर आपने क्या कमबैक किया, मैच ही चेंज कर दिया. सो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड? नहीं, सबको ही पता है जिस तरह के खुर्रम भाई प्लेयर हैं और वो अगर विकेट पे रहें और पूरे ओवर्स अगर खेल जाते तो हमें पता था कि वो एक तरफ गेम हो सकता था. लेकिन बिलीव था और यही बिलीव रखा हुआ था कि इंशाल्लाह जैसे ही एक आध ब्रेक थ्रू मिलेगा तो हम लोग ओवरकम कर जाएंगे गेम. जी, वेरी वेल प्लेड एंड ऑल द बेस्ट. रमीज अजीज, कप्तान उमर एसोसिएट्स, 3 दफा से टाइटल जीतने वाले कप्तान हैं, बट दिस टाइम कैप्टनिंग उमर एसोसिएट्स. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर नदीम डालिया टू प्लीज प्रेजेंट अ मोमेंटो टू आवर चीफ गेस्ट ऑफ द डे, Mr. Raisuddin Sheikh. Now I would request Mr. Jam Nafis to please present the memento to Mr. Yusuf Akram. I would request Mr. Nadeem Dalia to present
Another memento to Mr. Hanif ST, our guest of honor for the day. And that's all from today. Thank you everyone for joining us to the presentation party and all the team plays. We'll see you again tomorrow with another game. Till then, take care.